Okay, the questions, comments or concerns? Coming? Coming to any Where? Okay? I'm allowed to start? Okay, thank you very much. Okay, so revision. So far in this subject, electric circuit analysis, where we were discussing the electric circuits operating at the AC signal. Okay, as usual, we started with the discussion of phasors, signals, AC signals. We take their phasor forms. We encountered with the impedance, and then we revise all the techniques and methods that we discussed in the ECA one. Right? How could one solve a circuit by using? How could one solve the circuit where DC was operated and that DC is changed to AC signal? Okay, the rest of the methods, techniques, steps was the same. It was mesh, nodal analysis, Thevenin superposition, and etc. Then we start the discussion of power, AC power. Okay. We start with the conventional definition of P is equal to VI. We see the instantaneous power. We claim that it is difficult to measure the instantaneous power at every instant of time. So we introduced another terminology, which was the average power. Okay, and that was half of phasor of voltage and complex conjugate of the current. Okay, if a circuit or if a component has V voltage, phasor voltage, and the I current is flowing, then we have to simply multiply the voltage and the complex current. That will give us the average power across that component. Okay, before going to switch any other terminology, we go through the concept of the very important concept in electrical engineering of impedance matching. Okay, how could you match your load? How could you match your output with your system? Okay, so we see that this time ZL, lowered impedance, is equal to the complex conjugate of the Thevenin impedance, or the impedance of the whole of the circuit. Okay, and the consequent power, the maximum power that will transfer from the source to the load, that will depend on Thevenin and the R Thevenin. Okay, V Thevenin. Yes, the formula is right. Please go. Okay, if instead of load impedance, if instead of an impedance connected at the load, we have a resistor as a load, then that power formula will be simplified to the I, yes, I square R half of it. Okay, very good. And our equivalent load resistance, or Z of L, in case of resistor, that will be the Z Thevenin instead of that conjugate, absolute value of that, obviously. Okay, then we see another terminology, another commercially available terminology. The last lecture, root mean square. Okay, if we are interested to find out the DC factor of an AC circuit, AC signal, okay, that how much an equivalent DC signal could produce the power that was provided by an AC signal, then we can find out that by taking square of the AC signal, take mean of that output, and then overall square. That was called root mean square, or the effective value of an AC signal. Okay, so that was the last topic, and unfortunately we missed
two lectures to upload. Okay, that was got corrupted or whatsoever. Okay, and meanwhile, as it is the last lecture before the midterm, so meanwhile we also discuss some professional ethics. Okay, we discuss IEEE's ethics, code of conduct, code of ethics, and that was National Society for Professional Engineers, NSPE. Okay, what was their code of conduct and what was their code of ethics? Okay, so what we demand from you through that practice, you could have a scenario as you go through your assignments. You could have a case study, and you have to judge what you have to do by considering the respective society's code of conduct, IEEE or NSP. Okay, you have to highlight that which that your act is supported by which of the conduct, ethics, and which other channel, if you want to adopt, you have to adopt. Okay, so I think you're facing some kind of difficulty to do that. I came to know that that was a difficult part. What was the difficulty in that? You have to read and understand and then apply according to your scenario. But if you have something that you're missing, then you're supposed to tell me. Yeah, man. Mohammed Ali? तो जो उसके सारे कोड ऑफ कंडक्ट वो हैं वो जुबानी फिर याद करने पड़ेंगे कि No, absolutely not. वो okay. You will have that in your exams. Okay. Thank you very much. I forgot to share that. That will be a kind of open notes. Open notes for that. You will be allowed. For example, if you have a question regarding the code of conduct of IEEE, so in the question paper it will be stated that you can take with you. Okay. Yeah, because electronic gadgets are also not allowed. You can't take mobile, so you are supposed to take print of that. Okay. I don't think that we need any formulas to remember. If you think that we can take it as an open book as well. Okay. So you can take your formulas in the shape of book. Okay. I don't think that we need. Huh? What do you say? That's the last class, and I have to make that exam as well. So if you think that the open book will help you, then we can go for the open book. Otherwise, it's okay. Subjects like EMT, I myself make that compulsory that it is an open book, and I announce in the first class so that you don't need to remember the formulas and everything. Okay, you better to copy the concepts and apply those concepts. Okay, so okay, I don't. Okay, you can discuss and let me know after the class. Okay, okay. So let's start. We have excuse me. We have another terminology regarding the power section. Okay, when we start the discussion, you say that P is equal to VR. Okay. So if we have a signal which has a maximum magnitude okay, and their respective phasor forms okay, then the average power, first of all we find out the instantaneous power, and we got cosine multiplied by cosine, and that give us the half. Okay, when we solve that by using an identity. Right? That's our power. Okay.
And when we go to the root mean square, it was for a sinusoid. Okay, it's a sinusoid. This is the sinusoid. Okay, okay, that's good too. So this will transform as right. This is our power. Okay, up till now. So we could split that resultant power into more sections, into more terms. The magnitude term is called apparent power, denoted by S. Okay. Apparent in terms that, if you see, this is the power that we could also find by applying the DC signal. VRMS, it will give us the effective DC. Okay, कि अगर आप इस अमाउंट का DC लगा दें तो फिर आपको ये पावर मिल जाएगी, और DC की पावर की ही क्या, V effective या V root में VI था ना, यानी जो आपने DC सप्लाई दी है वो कितना वोल्टेज दे रही है, वो कितना करंट फ्लो करवा रही है. The product of that was is equal to VI. In the last topic, the root mean square, we stated that if instead of a DC we applied an AC, okay, then that AC will also produce some equivalent amount of that DC if we replace that AC, and that was the amount RMS. I could write, no? Huh? DC transform to AC or AC transform to DC. So this is the power. The DC circuit. If we instead of AC circuit, AC signal, sorry, if I apply a DC, then this will be the power. Agreed or not? Yes, sir. Sure? Yes. पक्की बात? क्या बात? मतलब अगर शाबाश. डीसी में वो सेम पावर लेना चाहते हैं जैसी, Very good. तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू जी, जो सिग्नल आपने अप्लाई किया है उसकी आरएमएस वैल्यू लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी अमाउंट का वोल्टेज सोर्स लगा दें और वो वोल्टेज सोर्स इतना करंट फ्लो करवाए, ठीक है, या इतनी अमाउंट का करंट सोर्स लगाएं और वो करंट सोर्स आपके सर्किट में इतना वोल्टेज जो है ना वो उसके अक्रॉस डेवलप करे, तो फिर जो पावर आपको मिलेगी वो वही पावर है जो कि एसी सिग्नल चाहे आप अप्लाई कर दें, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ था, या डीसी अप्लाई कर दें तो ये पावर मिल जाएगी. ओके, गुड. सो दैट इज द पोर्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ apparent. It only involve the voltage and the current, the magnitudes. Okay, and this term, it is called the power factor. Okay, that's a very important term. We will have to handle it, inshallah. Now after the exams, we will discuss it more effectively. Okay, so far they have different units for that apparent term, apparent power, and that is the units are voltage ampere. Okay, just to distinguish the units of power, which is watt. Power is a unit of watt. It is also the power. Okay, VI. Okay, or DC. Okay. So in order to differentiate between the two units, differentiate this term S, apparent power, from the P, they have labeled it as volt ampere. Okay. Okay. Most of the time
When you go through some heavy power devices or somewhere like that, if you go through a railway station and you see some components installed on those lines there, or more common is the transformers. If you ever notice on a transformer, it is KVA. Yes, sir. Okay, you can try to notice now. There is KVA instead of watts. Okay, so okay, and that kilo voltage ampere is providing us this information, the magnitudes. Here is the power factor. Okay, power factor is known at. We could find out the power factor through different ways. Okay, if you have the power supplied by the source, and if you know the product of voltage and current, root mean square or the maximum, okay, you can find out the power factor. Might be a kind of a difficult way. Okay, the other way, if you have an electronic circuit, is this term very familiar to us? Hmm? Yes, sir. Hmm? So if you have impedance of a component, load, or the circuit, equivalent circuit, okay, this complex or the phasor impedance will contain two parts: magnitude and the phase. Okay, that phase must be the ratio of voltage and current. Okay, in other words, that must be the ratio of the phases of the voltage and current. And here in the power factor, we are also dealing with the phases, the difference of phases. Okay? With me or not? Yes, sir. Okay. So another way to find out the power factor, find out the equivalent impedance of the circuit. Okay. If you have to ask, if you have been asked, if someone say what is the power factor of this circuit, okay, and none of the things are provided, equivalent voltage or equivalent current, the power, okay, then the other way is to find out the impedance, equivalent impedance of the circuit, okay, and you have already found out it through the okay, Z Thevenin was the total impedance provided by the source at the load. Okay, here we are again talking about that. Or if it is about a single component, then you have to find out the voltage and current of that, and you have had so a very good practice. You have spent a lot of time to find out the voltage and current across flowing through a component. Okay, you can apply any of the method: mesh, nodal, KCL, current divider, voltage divider, whatsoever. You know, you very well know that how to find out the voltage or current flowing through a component. Okay, so if it is about a circuit,
If it is about a component, you can easily go through the step. Okay. One more step. Power factor also provides us the information about the capacitive or reactive reactance. The reactance part is capacitive or the reactive. The power is leading or the lagging. If current is leading, this term, okay, it has a greater phase angle than this one. For example, it has 0 degree and it has, okay, the phase of the current is 10 and it has 0. Okay, it means current is leading the voltage. Okay, and if you remember the natures of the components, resistor, capacitor, inductor, so it is the property of the capacitor. Okay, so the reactance equal to it is a capacitive reactance and the power is leading. I leading, P leading. Okay, the question will be judge that power is leading or lagging. Power factor is leading or lagging. Okay, ideally power factor range from 0 to 1 because cosine range from 0 to 1. Okay, if both of the phase, these are in phase, both of the phase are same, cosine of 0 1. For which of the component? Resistor. Very good. Abdullah, resistor has the same phases of current and voltage. Okay, 90 minus 90, 110 minus 110, 12 minus 12. The sign of 0 is 1. So power factor will be 1. Resistor. Okay. For the inductor and capacitor, 90 degrees. they are out of phase. Okay. So 0, 90. Okay. 182, 70. Vice versa. Cosine of 90. 0. Reactance. Okay. Which of the reactance part? Capacitor or inductor? Okay. Now we are discussing that. Okay. If current is leading, that will be capacitive load. And the power will be leading. Okay. On the other hand, if V is leading, okay, then power will be lagging. I lagging. Oh. Okay. Or V leading, power lagging. Okay. And in the inductor, first there will be the phase of the voltage, and then there will be the current stored in that. Okay. ये मेरा अपना देसी तरीका है याद रखने का, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो कि कैपेसिटर में चूंकि वोल्टेज स्टोर होता है Q इक्वल टू CV, तो पहले करंट आएगा तो वोल्टेज स्टोर होगा. That's my own. That's not a pet formula. Okay, just to remember the things. But I said that you have to go through the logical way, the conceptual way, that why capacitor stores the energy in the form of voltage. Okay, so let's start an example which will clarify all of this. Okay. Anything so far? Any question? Brian? No. Shahzad? Okay.
Okay, capacitive and inductive loads, power leading, lagging, power factor. Okay, 11.10 states that determine the power factor of the entire circuit of figure 11.18. Okay, 11.18. I think we should go through the practice problem 11.9 first. Obtain the power factor and the parent power of a load. Okay, he has directly given us the impedance of load. In the next example, we have to find out that load as well. Okay, so that's why I will prefer to go through this practice problem first. He's asking about the power factor. Power factor is equal to, okay, and the apparent power S is equal to V or right? Yes, sir. Depends upon the data that you have. Okay. So now we only have the impedance. Oh, we have the voltage as well. When the applied voltage is this impedance, applied voltage is T20. Find out. Very good. He gave us omega plus tan x. Okay, fellas. So we could find out this value. So it is given. Very good. I is equal to V over Z. Very good. Okay. So in this way, got. Okay. Now what about the power factor? Abdullah, how could we find out the power factor? सर जब हम आई फाइंड करेंगे Okay, good. सर दोनों के एंगल लगा देंगे उसमें Very good. फाइंड कर You have already phase of voltage, वोल्टेज and when we find out I is equal to V over Z for this section, we will automatically पुट डाउन वैल्यू have the value of current, the value of phase of the current. Okay, so in this way you can also find out the power factor. Any other way? Any other thing? ये आसान तरीका है Okay, for example, let's suppose that we don't have the voltage for that component in which he is interested to find out the power factor. Then, yes? Okay, that's good. बिल्कुल ऐसा ही है अहमद. सर हम करंट फाइंड करेंगे उसमें Okay. Now I'm asking about any other method than this one. That's a very good method. That's applicable. Okay. अगर करंट दिया तब भी फाइंड कर लेंगे Yes, that's another thing that he has also given us, the current. My point is, if he only give you the impedance, this is all you have. I forgot about this. At the moment, you have to find out the power factor. You have the impedance and you have to find out the power factor. How will you find out? Okay, coming to you. Shep, it's you. Kamran, you have also noted down. Go through. पावर सर पावर और पेरेंट पावर Okay, if you have P and S. Okay, good.
power factor is the ratio of P over S. Okay. So for that you have to find out the power. Sorry. Okay. So you have to find out the voltage and current like this. How will you find out that? What is he saying? Come on. इम्पीडेंस का फार्मूला You have also written on the notebook because you don't have belief in the book. Huh? Abdullah? कैपेसिटर के लिए इंडक्टर के लिए Okay. Can you give me the phasor expression of impedance? The general phasor expression of the impedance. Z is equal to in terms of voltage and current. The formula of impedance in terms of voltage and current. Sure? The formula of impedance in terms of voltage and current. Z is equal to VI. Huh? The formula of impedance. Do you know any formula which has impedance, current and voltage? Do you know? Remember? So impedance is equal to R plus J omega RL R plus 1 over J omega C. Okay. I'm saying the formula which contains impedance, voltage and current. V is equal to IZ. V is equal to IZ. So Z is equal to G is equal to I over V over I. V over I. Okay. So how will you describe it in the phasor form? What is, if you expand that phasor, then you have two things, magnitude and phase. Yes. Okay. Angle. And this. Sir, V I angle. So now can you tell me another method, another way to find out the power factor? Ahmed? अगर हमें एंगल का पता हो किसके एंगल? कैपेसिटर और इंडक्टर की We don't have any capacitor or inductor here. The question has stated impedance and asked about the power factor. Okay. We don't have that formula. Okay. In the first step, we thought that okay, what is the formula of power factor? So you say okay, the power factor is by definition cosine of theta b minus theta I. He has only provided us the complex impedance. Yeah. Cameron, think over it. Just look at the board. Cameron, just look at the board. The board is shouting loudly. I have the answer. Oh, look at me. Oh, where are you going? I'm here. Oh, come here, please. I have the answer. The board is shouting it. सर Z की वैल्यू पुट करेंगे इसमें. Which of the value? जो impedance दी हुई है हमें ऊपर. Okay. This one here. Yes. sir. Okay. So what? अब क्या करें? फिर I क्या? को उधर ले जाएंगे V की निकल आएगी. V की वैल्यू नहीं, I तो अननोन है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 60 प्लस 40 जैसे ये टर्म जाकर अननोन मल्टीप्लाई हो जाएगी. What's the big deal? सर एंगल देंगे. वह सोचे यार. सोच रहा हूँ. Okay. Ahmed, क्या ख्याल है? How could we find out the power factor while we are given the impedance?
हाँ साले सॉरी Is it so? That's what you want to say? Okay. कैसे? हाँ भाई अभी बात समझ नहीं आ रही मुझे अब ये कैसे होगा ठीक है ये भी हमने थ्योरी में बात की है अभी थोड़ी देर पहले ना कि अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे जो आपको इम्पिडेंस गिवन है उसका एंगल आप ले लेंगे ओके लेकिन यहाँ पे तो जस्ट इम्पिडेंस गिवन है यार उनको करना था सोचने दो फंसे हुए बेचारे हाँ जी अहमद कामरान अब्दुल्ला ये फेजर फॉर्म में ले जाएंगे ओके ओके क्या लेके जाएंगे जनाब तो फेजर फॉर्म में आ जाएगा तो आई डिडंट सॉल्व इट it will be tan of 2 by 3 what is the numeric answer 3.6 okay convert it as a whole in the phasor form 60 plus 40j use your calculator yeah? plus 73 point okay and what is that 72.11 angle 33.69 72.11 okay impedance was given so the angle of impedance is given and we just state that the angle of impedance is the angle of power factor as well okay the cosine of angle of impedance okay yes हाँ भी है पक्की बात है नजर आ रहा है okay so in this way you can find out the power factor okay okay नाश्ता वाश्ता करके आते हो हैं नहीं क्यों भाई जल्दी उठ जाया करो जल्दी उठने तो खुद बनाना पड़ता है तो अगर देर से उठे तो इनकार ही है या नहीं सर ओके क्वेश्चन 11.10 practice problem determine the power factor of the entire circuit of figure 11.8 so let me draw the circuit first different one the practice problem okay Then हम resistor is connected to the okay जी this is a circuit जैसे calculate the power factor of the entire circuit of figure 11.19 as seen by the source as seen by the source कि ये जो सोर्स है ये कितनी पावर जो है वो इस तरफ इसको देखिए व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स एवरेज पावर भी हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज पावर क्या थी हमारे पास फॉर्मूलास ऑफ एवरेज पावर हाफ ऑफ द ओके VMIM और VRMS IRMS okay and he said that this one is RMS
Okay, it's given in the question that the supplied voltage is the root mean square. Okay, so the values that we will find out here, the current or the voltage across any component, that will automatically be root mean square. So the average power will be average root mean square power. That will be V RMS, I RMS, and the cosine of the difference of their phases. Okay, so the first target, we have to find out power factor. Come on, man. We have to find out the power factor and average power. Average power. Voltage. and that will be square. Okay, because the given is in I. Okay. So where to start? क्या करें अभी? केड़े पास जाऊँ? तो मैं लिख देता हूँ. Yeah. It's better to ask in Punjabi than English. Punjabi is a good language. Yeah, I do agree with that. So where to start? क्या किया जाए? पहला step. कामरान, उठ देख. इसमें हम पहले वैल्यूज में करेंगे IM Okay. और VM की. The current flowing in each component Yes. and the voltage across the each component. Okay, why? He's only interested in the power that is seen by the source. The power that is seen by the source. The source has nothing to do with how many combinations or how many things are. Yeah, it has to do with it. It has to supply current accordingly. That which are the combinations. करंट होगा तो उसका Okay, very good. Okay, so how you are going to find the current? Which method you are going to apply? से मैश भी लग सकता है इसमें. Okay, so far that I am unable to understand, or sorry, let's start in this way, that I am able to understand that we don't have much time. In the question, he is interested to find out the total current supplied by the source. That's what he is saying, that the power seen by the source, P is equal to VI, he is supplying this much voltage. So how much current is flowing through the circuit, or how much current is supplied by the source? एक ही बात. Okay, so सही. अगर हम इम्पीडेंस फाइंड कर लें, impedance तो सबकी given है. टोटल इम्पीडेंस जो हो, Equivalent impedance. Okay, फिर we हम find out the I equivalent value impedance. Okay, then सिर्फ I फाइंड हो जाएगा. okay, और फिर वो P इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला. okay, ठीक है. How could we find out the equivalent impedance then? First, just give me a तो उसको एडिशन 8 और -6 को ऐड करेंगे. Okay, good. These are in 8 minus 6 ohm. 8 -6 Okay, that पैरेलल में 4J से करेंगे. very good. We will solve it. फिर सीरीज में 10 के साथ. Okay, so finally we got 11.8 plus 4.47 J. I intentionally wrote the Cartesian one. Okay, so this is the equivalent impedance. Sorry. Yes. ये वो फार्मूला I इक्वल टू रिवर्स है. Okay, so now we can find out the impedance. Oh, sorry, current करंट via V is equal to IC. I So I is equal to V is given, yes. G is also and एंगल में फेज. we have the impedance as well, which is 12. 80. 80. शायद हमें 20 नहीं होगा.
guess it's 20, sir. 20. Most of the time it happens that the most difficult thing for me is to read out my own writing. Okay, I'm sorry, ma'am. Just kidding. Okay, so this 20.62. So ratio of that will give us the value of current flowing in. Okay, so we can find out, and obviously this is RMS, this is RMS. Okay, and this will give us. He's interested in power or apparent power. Calculate the power factor. Okay. As seen by what is the average power supplied by the source. Okay. Okay, so he is interested in average power. So we will have the cosine of this angle. This one, the voltage, and the answer. Okay, so what about the power factor? Chef, who could find out the power factor? Voltage, phase of voltage minus Phase of voltage minus current. the phase of current, and then take cosine of that. Okay. Any other thing? That's good. That we can find out from the voltage and current. We can find out the power factor by using voltage and current. Any other method? Yes, anyone can. जब सर हम एवरेज पावर फाइंड करेंगे तो उसके बाद अपेरेंट पावर कितनी पावर होगा ओके, P ओवर S की बात कर रहे हैं. ओके, इसके अलावा और कोई मैथड? अब्दुल्ला, और कोई मैथड? इम्पीडेंस. अब्दुल्ला, सर पावर फैक्टर निकालना है और ये डेटा जो है वो गिवन है. सर आई फाइंड कर लिया, वी फाइंड कर लिया. आई फाइंड कर लिया, वी फाइंड कर लिया. ओके, उस मेथड से निकाल लिया. वी आर इंटरेस्टेड टू hunt about any other method that hopefully will find out the power factor. ये क्या था? Okay. Any other method to find out the power factor? हाँ भाई, बस कोई और तरीका पावर फैक्टर निकालने का हो क्या? वो मेथड हो क्या? मेथड हो क्या वो? कारण इम्पीडेंस के एंगल निकाल के तो वो कोस जो आप पहले किया एक किया था तो आगे वापस. अब ये यस पावर फैक्टर निकालने के लिए और मेथड. पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ये होता है नोट्स. यू जस्ट हैव राइट डाउन. या आपके पास बुक है? cosine of theta v minus theta e. ओके, वेरी गुड. कोसाइन ऑफ Theta v minus theta e. वेरी गुड. दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर. ओके, और अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि वोल्टेज और करंट निकाल लें, जिससे अभी निकाला, और फिर उनके फेजेस को यहाँ पर पुट कर दें. ठीक है, लेकिन अब हम जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, वो वोल्टेज और करंट नहीं निकालना. ठीक है, तो कैसे पावर फैक्टर निकालें? अभी मसला हुआ. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी सेशन में दूसरी दफा सॉल्यूशन इसी सवाल का जो है वो जवाब दिया. हाँ शेफ. इम्पीडेंस का एंगल निकला तो उससे तो उसका कोसाइन ले सकते ओके, पावर. हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? इम्पीडेंस का तो ये कह रहा है कि एंगल जो निकलेगा उससे क्यों ले लो उसका एंगल? भाई वो इम्पीडेंस है,
ये एक अलहदा चीज है इम्पीडेंस। इसका क्या वास्ता है वोल्टेज और करंट के फेज से? सर एक का एंगल हम पता होगा तो फिर वो फाइंड हो जाएगा दूसरा। हाँ वो तो वी और आई हो गया ना, वी आई फाइंड आउट हो गया, ठीक है, इम्पीडेंस के थ्रू, ठीक है, वो ऊपर से घूम के आ गया, ठीक है, ये हो गया। जिस तरह अगर हमें साथ वाले ग्राउंड में जाना हो तो उसके लिए एक तो बिल्कुल सामने दरवाजा जो कि लॉक है, ओके, और तो वहां से हम जा नहीं सकते, तो हम वो ऊपर से होकर बिल्डिंग क्रॉस करके फिर इस पार्क में जाएंगे ना, ठीक है, या ये खिड़की जो थी यहाँ पर ये वाली तोड़ के आगे से दीवार तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे और फिर हम सामने पार्क में चले जाएंगे। ऐसे ही एक ग्राउंड के सामने ये दीवार भी तोड़ी जा सकती है, इस दीवार के बाद ग्राउंड ही है ना, तो यह नंबर ऑफ वेज, ओके। अब आपने कौन सा वे, इस ताले की अगर चाबी हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये सबसे आसान तरीका होगा, बिल्कुल 10 कदमों के फासले पर ग्राउंड है, ओके। हाँ शाबाश। सर इम्पीडेंस को फेजर में चेंज करें। इम्पीडेंस को फेजर में चेंज कर देंगे, कर दिया, और क्यों करूँ, वो क्यों मिल रहा है, ओके शाबाश। फेजर में जी ऐसा यहाँ से एंगल को भी आएगा। कैसे आ जाएगा, आपने तो ये बात भी कर रहे हैं। लास्ट में सर जो एग्जांपल उसका हमने वहाँ पे tan इनवर्स किया था तो वो ठीक है। ओके उसके बाद फेजर में चेंज करने के बाद हाँ तो वो क्यों लिया था, ये इम्पीडेंस का जो एंगल है इसके ऊपर, इसके पीछे क्यों नहीं लोग हाथ धो के पड़े कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला है। 20 पॉइंट कितना था ये, 20.62। ओके, इसके ये वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज है, क्यों कह रहे हैं अब्दुल्ला, दैट्स द थिंग, ये वो चाबी है जिससे हम सामने का दरवाजा खोल सकते हैं। थोड़ा सा भूल गया। ओके इम्पीडेंस से बात शुरू करें। सर इसी का अगर को साइन ले तो उसका है क्यों ये बात तो ठीक है, ये बात ये टोटल इम्पीडेंस का फेजर है क्यूबी माइनस थीटा वी माइनस थीटा ई टोटल ये लिखा हुआ है एंगल, इसी का साइन ये इम्पीडेंस का एंगल है, यस सर। इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड और ये इम्पीडेंस का ही एंगल, ठीक है। यस सर। तो अब इशू ये चल रहा है कि ये यहां पर ये वोल्टेज का कैसे डिफरेंस आ गया, ये इम्पीडेंस का एंगल है, ठीक है ना, इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस which contains magnitude and an angle, okay, which is a different thing than this theta v minus theta. So why they are thinking to put this angle there? We could think on these lines के क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसका और इसका कोई रिश्ता है? इम्पीडेंस क्या होती है, अगर मुझे वोल्टेज और करंट के बारे में जो है वो बात करना, इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट का कोई ताल्लुक वास्ता है, ये बातें सुनिए यस सर। इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट का कोई ताल्लुक है, P over I, ये कॉम्प्लेक्स है वोल्टेज, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिखूं इसका, और नीचे वाले को चलो, लेकिन ये एक्सप्रेशन अभी पूरा नहीं लिखा है, फेजर फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी चीज को, फेजर फॉर्म लिखी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस थी, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस, इसकी फेजर फॉर्म क्या थी, मैग्नीट्यूड लिखा और उसका एंगल लिखा है, ऐसे ही है, ओके। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, आगे एंगल लिखेंगे, सारा एंगल लिखेंगे, एंगल लिखेंगे इसका थीटा ओके पावर में मैग्नीट्यूड आई है, एंगल थीटा है, ठीक है। फिर अब सर एंगल जो थीटा है उसको ऊपर के साथ क्यों ले जाएं,
क्या ऐसा हो सकता है कि हम एंगल्स को डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है? सर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा माइनस हो जाएगा। क्यों ऊपर जाएंगे? ऐसा कहीं पर है, अलाउड है, पक्की बात है? यस सर। हम खुद तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते ना। सर डिवाइड से ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ओके भाई, ये दोनों ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये दोनों ये कह रहे हैं कि अगर फेजेस को सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई कर डिवाइड से मल्टीप्लाई करना। तो उसका मतलब होता है कि उन फेजेस को सब्ट्रैक्ट करना हो। यस सर। पक्की बात है। और अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो उनको ऐड करना हो। ठीक है, 30 डिग्री फेज 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय फेज 10 डिग्री मींस 30 प्लस 10 डिग्री। ओके, नहीं ऐसे ही नहीं, इसको नहीं, कोई परेशानी हो। अगर मुझे 30 डिग्री और 10 डिग्री को डिवाइड करना है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे कर लूंगा, क्या नहीं? अगर मुझे दो फेजर क्वांटिटीज को डिवाइड करना है फॉर 3, ठीक, तो ये कैसे होंगी? इनके मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें सिंपल नंबर्स डिवाइड होते हैं, और इनके जो फेजेस हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई, पक्की बात है। तो इसी वजह से आपने यहाँ पर ये किया कि इनके मैग्नीट्यूड्स तो वैसे ही रहने दिए 4/3, तो जो इनके फेजेस थे, जो पहले थीटा वी ओवर थीटा आई था, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं अब्दुल्ला? ऐसे ही। अच्छा जी, फिर मसला अभी भी हल नहीं हो रहा, तो आगे सॉल्व कर सकते कैसे सॉल्व करें? अब अगला स्टेप क्या है, क्या करना है? क्या हैं। सर पावर फैक्टर निकालना है और सिर्फ इम्पीडेंस गिवन है, और ये लोग कह रहे हैं कि इम्पीडेंस का जो एंगल है ना वो इस्तेमाल हो सकता है पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। क्यों भाई? अब्दुल्ला, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। इतना तो मुझे भी पता है कि अब्दुल्ला का नाम जो है ना वो अब्दुल्ला है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी, इम्पीडेंस जो है वो गिवन है, और पावर फैक्टर जो है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये कह रहे थे कि जो इम्पीडेंस का एंगल है वही पावर फैक्टर का एंगल है। कैसे? बात यहां पर आकर रुकी कि कैसे ये लोग ये बात कह रहे हैं, या आप लोग ये बात कह रहे हैं कि जो इम्पीडेंस का एंगल है, इम्पीडेंस का जो फेज है, सॉरी एंगल का गलत इस्तेमाल, इम्पीडेंस का जो फेज है वो पावर फैक्टर का आर्गुमेंट है। कैसे? इसका जवाब चाहिए हम। ओ यार इतना लिखा हो यार, क्या कैलकुलेट कर? सर tan इनवर्स लगा दो। क्यों लगा? इम्पीडेंस का फेज ये है, अभी आप लोगों ने निकालने, ये इम्पीडेंस है ना, ये वाला, इसका फेज ये है कि नहीं है? यस सर। है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए कोसाइन किस चीज का चाहिए? फेजर का इनका एंगल का थीटा वी माइनस थीटा है, थीटा वी माइनस थीटा है। ये थीटा वी माइनस थीटा है कैसे आया? है सर एंगल z की जो इम्पीडेंस का एंगल है वो z v ओवर थीटा वी, आई होता है। हाँ वोल्टेज वी भी हो रहा इसमें है आता है, करंट भी इसमें आता है, दोनों वोल्टेज और करंट सब्ट्रैक्ट हो गए थे, इस Exactly. वजह से ये एंगल बना था। गुड। इसलिए हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, वो पावर फैक्टर के एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन क्या है कि अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हो और आपके पास सिर्फ इम्पीडेंस हो तो आप पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते। आपको पहले वोल्टेज निकालना है, फिर करंट निकालना है, फिर उनके एंगल्स लेने और मुझे पुट करना। ठीक है, समझ आ गई? कर लो कैसे? क्यों यार शेफ,
कितने फंस गए ऐसे क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, क्या मसला क्या है? इम्पीडेंस का फार्मूला ना वोल्टेज का फेजर डिवाइडेड बाय करंट का फेजर, उनके एंगल जो है वो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस का जो एंगल होगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वी और आई का होगा, तो उस एंगल को हम यूज कर सकते हैं उसका कोसाइन लेके पावर फैक्टर। ओके, यानी कि शायद ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने पावर फैक्टर निकालना है और आपके पास इम्पीडेंस गिवन है, ठीक है, तो आप Z=VI इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज निकालने उस इम्पीडेंस का, फिर उससे करंट निकालने, फिर जो वोल्टेज आया है उसका फेज और जो करंट आया है उसका फेज यहाँ पर रखना, तो पावर फैक्टर निकल आएगा। ये क्या जा रहा है शायद फर्स्ट टाइम निकाल है? वोल्टेज करंट सर फाइंड करने की जरूरत है क्योंकि हमने इम्पीडेंस फाइंड वो कह रहा है कि वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इम्पीडेंस की बात है। क्यों भाई, वोल्टेज और करंट क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे? सर वो उसका इम्पीडेंस जो दिया हुआ है, हाँ, दैट इम्पीडेंस जो दी हुई है, शाबाश। इसी का एंगल इक्वल वैसे डायरेक्ट आ रहा है तो वो कह रहा है डायरेक्ट जब ये आ रहा है तो हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है, जब हम ये दीवार तोड़ के ग्राउंड पे जा सकते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम चाबी लेकर वो ताला खोलें और फिर सीधा ग्राउंड में चले जाएं। ठीक, दैट्स इट। तो जब हमारे पास इम्पीडेंस है, मैं इसकी तरफ थोड़ा रीड कर दूं, मसला ये है कि फिर दोबारा से मुझे यहाँ आना पड़ता, जो दीवार है ये। वो कह रहा है कि जब हमारे पास इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट या इम्पीडेंस ऑफ द कंपोनेंट, जिसमें आप इंटरेस्टेड है पावर फैक्टर निकालने के, इस इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या है। क्वेश्चन में डिफरेंट चीज है कि ये सोर्स कितना देख रहा है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इस कंपोनेंट का पावर फैक्टर बताए, ठीक है। इन बोथ केसेस अगर आपके पास इस कंपोनेंट की या इस सोर्स की प्रोवाइडेड टोटल इंपीडेंस, ये सोर्स कितनी इंपीडेंस से कनेक्टेड है, इंपीडेंस है, तो जो उस इंपीडेंस का एंगल है, सॉरी इस इंपीडेंस का जो फेस है वो क्या होता है, वो ये चीज होती है। ठीक है इब्राहिम, सही सही पढ़ा हुआ मैंने। इंपीडेंस जो आपके पास है उसका जो फेज है वो बाय डेफिनेशन रेशो है फेजेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, और पावर फैक्टर में आपको यही रेशो चाहिए, राइट। इन अदर वर्ड्स पावर फैक्टर में आपको impedance का फेज चाहिए। सो अदर मेथड टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर कि आप impedance निकालें, उसका फेज जो है वो यहां पर आप पुट कर दें इजी। ठीक, वो पावर फैक्टर होगा आपके जो आपका रिक्वायर्ड पावर फैक्टर, चाहे वो एलिमेंट का पावर फैक्टर है, कंपोनेंट्स पावर फैक्टर और द इंपीडेंस टोटल सर्किट्स इंपीडेंस। यस सर अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। ओके सर क्या क्लियर नहीं हो रहा है? सर हमारे पास वहाँ से जो हमने इम्पीडेंस का निकाला है वो एंगल जो है, ओके सर एक एंगल है तो इसमें V एंड I, सर हम उसको कैसे पुट करेंगे? इंपीडेंस क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस, सर V=V/I कॉम्प्लेक्स वोल्टेज और कॉम्प्लेक्स करंट। करंट। कॉम्प्लेक्स वोल्टेज फेजर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ना यार क्या हो गया सर? अच्छा सॉरी, कमल यार प्लीज, आया वैसे उठ के ऐसे ही आया था, मैंने रुका ना होता ना सर, और हालात हो रही होंगे। ओके जी, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज जो है यार कमल, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज जो है उसको हम कैसे लिखते हैं? सर VM एंगल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उसका एंगल लिख देते हैं, फेज लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए वोल्टेज का फेज लिख दूं, V छोटा होना। इसी तरह ही I
अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो हैं? सर दोनों को डिवाइड कर दोनों को डिवाइड करके। डिवाइड के पीछे मैकेनिज्म क्या है, अगर आपको कागज पेंसिल पे करना पड़े फॉर एग्जांपल, तो हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स को कैसे डिवाइड करते हैं, उनके एंगल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड हो जाएंगे सर, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पक्की बात है कि वैसे क्या है? सर पक्की पक्की। ये दोनों तो डिवाइड होंगे कन्वेंशनल डिवीजन से, लेकिन जो इनके एंगल्स थे यानी कि हमारी तरफ फेसेस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस का फेज ही निकल रहा है ना, Vm और Im, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस का फेज निकला है। Okay? यस सर। अब किसी ने अगर मुझे डायरेक्टली इम्पीडेंस दे दी है 10 उसका एंगल भी यही होगा। ठीक है, इसका मतलब उसने मुझे ये वाली वैल्यू दे दी, ठीक? तो जो पावर फैक्टर में ये वाली वैल्यू चाहिए, नहीं? ओके, अब कुछ बात आगे चली। ओके, सो पावर फैक्टर निकालने का एक तरीका जो है ना वो ये वाला है, एक V/I से हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि फेजेस को आप कर सकते हैं, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है। द थिंग इज जो आपको रिलेटिवली आसान लग रहा हो, जिससे आपका टाइम बच रहा हो, ठीक है। सर जब किसी कंपोनेंट के क्रॉस अगर पावर फैक्टर फाइंड करना है, यानी इसके क्रॉस, तो फिर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, इस पूरी टोटल इम्पीडेंस का एंगल देखेंगे। आप जो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि पावर फैक्टर जो है इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ठीक है, कोसाइन ऑफ इम्पीडेंस का फेज, ठीक है। तो अब आपको इम्पीडेंस चाहिए, वो किसी एक कंपोनेंट की भी हो सकती है, पूरे सर्किट की भी हो सकती है, जैसी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर इस कंपोनेंट का पावर फैक्टर फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है, फिर हम इसी की इम्पीडेंस आप इसकी इम्पीडेंस लें, ठीक है, उसका जो फेज होगा वो लेंगे, ठीक है। J 90 डिग्री का बन जाएगा, कोसाइन ऑफ 90 0 आ गया, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय S या VRMS IRMS, और जो टोटल पावर आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे ही होना चाहिए, इंडक्टर और कैपेसिटर की पावर जो है वो 0 आ जाए, ओके, ठीक है या नहीं? ओके, तो वो आपके पास यहाँ पे पक्की बात है, ओके ओके जनाब। सो यहाँ तक जो है वो आपका कोर्स इंशाल्लाह एग्जाम में मिड टर्म में कवर होगा। क्वेश्चन कोई है तो प्लीज। जी अब्दुल्ला, okay, so the goal of conclusion of today's lecture is, if you have to find out the power factor, then you could adopt different ways according to the situation, okay. If you could find out the impedance, if you given the impedance, then no need to go to find out the phases of the voltage and current, okay. Directly put that phase of the impedance in the formula and got the answer. Unfortunately, or if you don't, if you are not provided with the impedance, then you are supposed to collect, or you are supposed to solve or find out the voltage and current. Then utilize the phases of the respective quantities to find out the power factor. Okay. Similarly, if you have to find out the power and you are given the impedance, then you are not supposed to find out both the voltage and current. Only try to find out the single quantity, either current or either the voltage. Find out the other one and then go on. Okay? Yes. See you in the exam. Thank you very much.